शुरू करते हैं वीडियो। पहले हम एक कॉम्पोजिशन बनाएंगे, इसका नाम रख देते हैं। उसके बाद अपनी टाइमलाइन लेंगे जिस पर हमें काम करना है। उसके बाद आपको मोशन ट्रैक पे क्लिक करना हो। मोशन ट्रैक पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह के पॉइंट दिखेंगे आपको। सिलेक्ट करके बढ़ते हैं तो इसके ऊपर इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। इस वाले अंदर वाले बॉक्स को भी थोड़ा बड़ा कर देंगे जिससे हमारा ट्रैकिंग डाटा सही हो। इसके बाद ट्रैकिंग पे चालू कर देंगे। गाइस हमारा डाटा जो है ट्रैक हो चुका है। लेयर पे जाना, लेयर पे जाएंगे, नॉन ऑब्जेक्ट क्लिक करने के बाद एडिट टारगेट पे क्लिक करेंगे, प्रेस ओके, फिर अप्लाई एक्स एंड वाई। ओके, ये करने के बाद आप सीधे सॉलिड लेयर पे जाएंगे, न्यू सॉलिड क्लिक करके ऑफ कर देंगे। इसको जो है नॉन ऑब्जेक्ट वाले लेयर से ट्रैक कर देंगे। इसके बाद अपनी इस लेयर को रीनेम करते हैं, नाम बदल देंगे आइज। डुप्लीकेट इसको नॉन ऑब्जेक्ट के ऊपर रख देंगे। इसके ऊपर रखने के बाद हम इस पर मार्क्स करेंगे। डेट पे करने डुप्लीकेट करेंगे। सेकंड में इसको हमसे पकड़ेंगे, दूसरा इसको लेंगे। एक्सपोजर
इमेज में करेंगे। मास्क पाथ ऑन कर देंगे इसका भी। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ होती है गाइस, हमारी मास्किंग ये पूरी हो चुकी है। एप्स में जाएंगे, कलर कलेक्शन में जाएंगे, कलर चेंज करेंगे। उसके बाद आपको एक और इफेक्ट लेना होगा, कलर करेक्शन एंड कर्व। कर्व लेने के बाद इसको डाउन कर देंगे, बेसिकली हम थोड़ा रियलिस्टिक लगे तो देख सकते हैं गाइस, कुछ इस तरह का लुक आएगा हमारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।